नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब इस आंदोलन की आड़ में कई ताकतें देश विरोधी हरकतें भी कर रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को किसानों की मांगों के समर्थन में अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारतीय दूतावास के पास लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई। खालिस्तान समर्थकों ने बापू की प्रतिमा पर खालिस्तानी झंडा डालकर ढक दिया। इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बापू की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने ढक दिया है। ग्रेटर वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों से आए सैकड़ों सिखों ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली। इसी दौरान भारत विरोधी पोस्टरों और बैनरों के साथ खालिस्तानी झंडे लिए कुछ सिख वहां पर पहुंचे। कई बैनरों पर खालिस्तान गणराज्य लिखा हुआ था। इनमें से कुछ खालिस्तानी सिख कृपाण हाथ में थामे महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आए और उस पर एक पोस्टर चिपका दिया। इस समूह ने भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन के विदेशी प्रदर्शन में खालिस्तान के झंडे लहराए गए हों। इससे पहले भी लंदन में भारतीय उच्च आयोग के बाहर प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के झंडे लहराए गए थे। वहीं भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने वाले लोगों के इस दुष्ट कृत्य की निंदा की है। दूतावास ने कहा कि उसने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने इस संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अपराधियों के खिलाफ जांच एवं कानून के तहत कार्रवाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने ये मामला उठाया। वहीं वाशिंगटन डीसी में कृषि विरोधी कानूनों के आयोजकों में से एक किसान ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ पर कहा कि इसमें किसान के साथ खड़े प्रदर्शनकारियों का कोई हाथ नहीं है। Today, the protest, of course, had people from all walks of life, somebody who's genuinely supporting the farmers, but there was also a class of pro-Khalistanis who were seen here outside the Indian Embassy. And of course, the statue of Mahatma Gandhi was also vandalized to a certain extent. How would you react to that as one of the organizers here? Every person on earth has their right to self-determination. Every single human being. Doesn't matter who you are, doesn't matter how you look, doesn't matter where you live or who you pray to, or if you pray at all. Okay? So, well, if the Indian media and the government want to label people as Khalistani, they've been doing that for centuries, literally, right? Not just, I mean, India hasn't been there for centuries, but the same people have been doing it. My answer is simple. Every person, no matter what group you put them into, has a sentiment attached to Punjab, right? If somebody wants to secede from a country, it's because they love that state so much. Texans and New Yorkers think very differently here in America, but Texans always talk about succession. Does Washington send troops that way? No, because they have the right to say that. The Indian Supreme Court has held up their right to say what they want to say, right? So them being involved here is not a bad brush taint, as many would like to say. For me, it's just another group that supports the farmers. It doesn't matter who you are, but you're supporting the farmers with whatever 2 cents you have. The other part of it is, where does Khalistan come from, right? In the current aspect of India, right? Within the last 35 years, you've seen this activism grow, right? Why doesn't that country, why doesn't India ask that question to its own people or its own governments as to why we have this? When in America somebody talks about, secession or against the government, we ask them why. But why vandalize? Why vandalize? So let's talk about vandalism. All over the country here in America, Confederate statues were vandalized and now they've been taken down. The people rose and the people said something that we discredit this kind of proportion of previous figures who were rapists, slave owners, or people who were complacent to slavery and rapists, but right? Gandhi was. If you look at his writings and the reports from South Africa when he lived there, right? He actually advocated to the British colonialism administration to treat African Americans less than, right?
There are numerous allegations upon him that have been proven of him being a rapist, of him being a less than decent human being. So my question is, Gandhi statues have been taken down all over the world. Why not this one? And here's one more thing. जब कोई एवेन्यू आपके अग्रेशन की रहती नहीं है ना, तब कुछ भी होता है। हिंदुस्तानियों ने 47 में गोरों के खिलाफ यही किया, राइट? तो जब आप करें अपनी आज़ादी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रहनुमाई में, आपकी रजीम में कोई और दब रहा है और वो आपके खिलाफ बोले तो वो टेररिस्ट है। This is the policy of many regimes around the world, but that's not how we define terrorists. We define terrorists by their actions. And in fact, Sikhs have never harmed anybody in the history of the world. So we can't be called terrorists by any definition of that word. All right. Thank you so much for talking to us. I appreciate that. गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में प्रदर्शन जारी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किसानों के प्रदर्शन पर कहा था कि किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।